सर लाइव का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स पे। I'd request everyone to kindly rename yourselves, please, and turn on their cameras. Wait, sir, I think we should start with the open discussion. Piyushi, yes, go ahead. Wait, sir, just a minute. Can we define the method to rename because there are lots of new people today. Yeah, I will do that. I will do that. आप पीपीटी शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। पहले हम कोई ओपन डिस्कशन पे बात करें, अभी लाइक नहीं, आप ओपन डिस्कशन वाला पेज ओपन रहेगा, आप उसको। ओके फाइन, so I'm starting now. Every joinees, I request you all to kindly rename yourself as per the NPC format. सबसे पहले आपके 2 लेटर्स इनिशियल हैं आपके जोन से, NZ फॉर नॉर्थ जोन, EZ फॉर ईस्ट जोन, WZ फॉर वेस्ट जोन, SZ फॉर साउथ जोन। आप इंडिया के जिस पार्ट से हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट 2 लेटर्स लिखिए। देन उसके बाद में आप अपने स्टेट का इनिशियल लिखिए जो आपके नंबर प्लेट पे होते हैं। देन उसके बाद आपकी सिटी का इनिशियल, देन आपका प्रोफेशन, देन आपका नाम। तो फर्स्ट 2 letters are for the zone. Next is the initials of your state as per the number plates, vehicle number plates, then your city initial, then your profession, and then your name. So I request everyone to kindly rename yourself so that we could know that where you belong to, where are you from, and what do you do, what is your profession. How to rename now? सर, आपने अगर आपने जो है लैपटॉप से लॉगिन किया है या मोबाइल से लॉगिन किया है तो पार्टिसिपेंट वाले कॉलम में जाइए, वहां पर आपका नाम होगा। आपके नाम के सामने जो है अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है आपको रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, उसमें ओके करके रीनेम पे ऑप्शन कर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आप कर्सर आ जाएगा जहां से आप अपना रीनेम कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका कीबोर्ड। अच्छा, नहीं वो तो बस नाम ही आ रहा है, नाम को ओके कर दिया। कीजिए, अपने नाम को क्लिक कीजिए अगर आपने मोबाइल से लॉगिन किया है तो। Yes, Seema ma'am, you want to say something? उसके बाद आप नाम को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपके ऑप्शंस आ रही होंगी, रेज हैंड, और उसमें आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी नीचे रीनेम की। तो आपके नाम के सामने रीनेम आ गया, तो नाम तो मैंने अपना डाल ही दिया है। नाम के साथ क्या क्या डालना है? सबसे पहले आपने 2 इनिशियल लेटर लिखने हैं। आप इंडिया के जिस पार्ट से हैं, नॉर्थ पार्ट से हैं, साउथ पार्ट से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, तो NZ एग्जांपल के लिए NZ फॉर नॉर्थ जोन, देन डैश आपकी स्टेट का इनिशियल जो आपके गाड़ियों के नंबर प्लेट पे होता है वो आपकी स्टेट का इनिशियल, देन आपका सिटी का इनिशियल, देन आपके प्रोफेशन का इनिशियल। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो AR लिखिए, इंटीरियर डिजाइनर हैं तो ID लिखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो MFR लिखिए, अगर आप सप्लायर हैं तो SPLR लिखिए शॉर्ट में। देन उसके बाद आप अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम वेद है, आप अगर मेरा वो देख रहे होंगे तो NZ-TL-ID वेद शर्मा। अच्छा ठीक है, NZ, अच्छा ठीक है। Yushi, would like to please take up? I'm sorry. सबसे पहले क्या लिखना है? जोन नेम। आप सर किस स्टेट से, आप किस एरिया से हैं इंडिया के? पूना में। पुणे से हैं तो आप WZ लिखिए सबसे पहले, WZ, देन डैश MH लिखिए। एक सेकेंड ना, मैंने लिखा WZ डैश MH फॉर महाराष्ट्र, WMH डैश TUN, सॉरी एक सेकेंड ना, MH
डैश PUNE पुणे, उसके बाद डैश, हाँ महाराष्ट्र के बाद पुणे PUNE, डैश आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हैं? एक सेकंड, WZ हुआ, फिर MH हुआ, MH के बाद पूना लिखो क्या? हाँ पुणे लिख दीजिए, PUNE, पुणे, डैश डैश अपना नाम डाला। लिखिए। सॉरी, फर्म आप का क्या नाम करते हैं? इंटीरियर डिजाइनर। ID लिखिए, ID डैश अपना नाम लिखिए। सर जैसे मैंने लिखा, मैं नोएडा से हूँ। हेलो, जी 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 जी, मैंने लिखा कि NZ नॉर्थ जोन प्लस UP, उसका नोएडा, फायर सेफ्टी, देन अपना नाम रामकृष्ण साहू। इज दैट ओके? Yes, it's okay, very good. Okay guys, we are starting now. So anyone who didn't rename, so आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो लोगों ने रीनेम किया हुआ है आप उससे एग्जांपल लेकर करके आप रीनेम कर सकते हैं अपने आप को. So time is pressing, so we are running short of time, so and we will start in short while. Yushi, kindly take over and start the open discussion topic. It's 8:08 now. Good evening, everyone. Let's begin with the meeting with today's open discussion. So we are left with 2-3 minutes. So let's start with the open discussion. So the topic is Vastu. What do you understand by the term Vastu? Anyone from the audience would like to give their view? Excuse me. So what I understand from Vastu is it's a firm belief from the Hindu religion that जो भी हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस वो अपना दशा और दिशा, इंटेंट, जो हमारा इंटेंट है वो अच्छा हो, और जो इंटेंट अच्छा कैसे होगा कि जो हमारा अगर इंटेंट अच्छा होगा तो हम अपना उसका दिशा भी ठीक से दे सकते हैं। अगर वो दिशा ठीक से दे रहे हैं तो वो फिर जो रिजल्ट होगा उसका वो अच्छा ही होगा। तो why I understand about Vastu? Anyone? I guess let me give some details. What I think it's a study of space, ventilation, and light. How we can use natural energies and how we can make it more positive for our house and space. This whole study is all about Vastu, how we can create positive vibes in it. Yoshi, may I? Yes, ma'am. Vastu is balancing all the 5 elements in our spaces. That is Vastu. Okay. Thank you all. Now it's time to start our training workshop. Ladies and gentlemen, please bring the club to the order. Also, I would like to request all the members to mute themselves so that there will be no disturbance. You will get a chance to interact with the presenter after the presentation. So the host can mute all the participants. It will be better. Sure, sir. Yeah. You please mute everyone. Good evening, everyone, and a warm welcome to this meeting of the club of the region of ClubNPC. I would like to start the meeting by requesting Vishal sir to come forward and be a captain doodle. During the meeting, they will make sure the participants maintain the decorum. Now, I would like to give the mic to ma'am. Thank you, Piyushi. Can I start? Yeah, ma'am. Please go ahead. Thank you. A warm welcome to everyone. Good evening. Already we have announced the Captain Doodle. So the power of the Captain Doodle has the power to stop anyone who is going out of track. Captain Doodle has the power to stop anyone who is taking too much time.
Captain Doodle has the power to stop anyone who is initiating any sort of argument. Captain Doodle has the power to stop anyone whose pitch or tone is not acceptable. Captain Doodle will announce winner for best introduction given by new joiners. Next slide, please. What is Club NPC? Club NPC is networking forum of the people of construction. As the name suggests, the club is made up of 7 pillars of the construction fraternity, that are architects, designers, PMC, engineers, contractors, suppliers, and manufacturers. The main purpose of the forum is to build a relationship with all the members in the group. Here, we don't believe in posting messages. Instead, we believe in meeting face-to-face in an online meet through Zoom. The purpose of the meet is to have a good interaction with each other so that we know each other and build trust among each other. To receive more information regarding the club, please do attend our online meet, which takes place on every Wednesday and the Friday. Next slide, please. Club NPC is a real club of the people of construction of fraternity, which gives its member a knowledge sharing platform. We are trying to develop India's biggest construction industry based on knowledge platform with lots of training and skill development sessions. We are not hunters, we are the farmers. We will cultivate something for all so that all can benefit for our out of heart. We are the architects, interior designers, engineers, consultants, suppliers, and the contractors, and lastly come the manufacturers. Next slide, please. What are the benefits of the club NPC? Most importantly, you can gain and share the knowledge here. You will have friends and helping buddies across the India. You will learn more about yourself and your professions. You will update and latest technology, product, and the skills. You will learn how to work with the team. You will learn how to engage with diverse group of the pupils. You will gain leadership skills. You will be able to give back to the community. You will have fun, and most importantly, it's all the free. You don't pay anything. We believe in the self-discovery, friendship, knowledge, fun clubs, leadership, and the latest. Next slide, please. Benefits of the active NPC members. We share a knowledge, showcase our opportunities, reputations development, relationship developments, networking, and most importantly, self-discovery. Next slide, please. We have different zones are there. We have North Zone, West Zone, South Zone, and the East Zone. And in the North Zone, we have 4 regions: Punjab, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, and the UP and Uttarakhand. In the East Zone, we have Bihar, Jharkhand, MP, West Bengal, and the Northeast. South, we only have Karnataka. And the West Zone, we have Mumbai, Gujarat, and Rajasthan, Pune, North Pune, South Pune, and there are different zones out there. Next slide, please. Club NPC registration certificates. So I'm glad to announce that we take a great pleasure to announce that Club NPC is now official registration club under section 21 and 1860. And thank you. And over to Feroz sir. Feroz sir, please. You're not audible. Thank you very much, Ms. Varsha ma'am, for the lovely introduction of our club NPC. Very warm welcome to every new joinees today. I can see that there are lots of new people there. Very warm welcome. And here is the
the team that have formed this particular group. Here's the Directors Club. Mr. Yogesh Jagatamka as a President and PR. Mr. Architect Karan Arora, Vice President and Director of Programs. Mr. Amit Shah, Executive Secretary. Mr. Mohammad Parvez, Treasurer and Director. Then we have Ms. Ritu, Mr. an Architect Rohit Jain, sir. All right, yeah, I got it. Mr. Mayur Mangal, Director of Club Administration. Then Ashish Bugra, who is the Director for IT Department. And we have Workshop Committee. Yeah. Mr. Ved Prakash Sharma, who is the National Workshop Head. Ms. Piyushi Nachrani, who is National Workshop Co-Head. And we have North Zone Executive Club, where Mr. Ved Sharma hold the Co-Head Workshop position. Mr. Shimpu Goel, who is the Governor of Punjab. Mr. Vishal Sachdeva, who is the National Co-Head of Chichet. And we have Mr. Sumit Agrawal as a National Co-Captain of Attendance Committee and Governor of UP. And we have Mr. Pramod Pelkham for National Co-Head and CRCO. This is the Delhi team. Mr. Ved Sharma is the Governor of Delhi region. Mr. Anil Mangoli is the President of India for Delhi. Myself, Shiroz Khan, Workshop Captain. Mr. Sanjay Sharma, Growth Captain. Mr. Tajinder Singh, Attendance and HR Captain. Mr. B.S. Kohli is the Treasurer and Mentor. Then we have Mr. Yashendra Kumar Sinha as a social media captain. Ms. Varsha Shukla as Chit-Chat Captain and Secretary. Let's talk something about the presenter. His name is Sanjay Kumar Sharma. His firm name is Shubh Labh Vastu. He is based out of Delhi. He has done BTech in Electronics and Communication and he has more than 35 years of experience in both MNCs and business. He's an expert in PYRA Vastu, Vedic Vastu, Contemporary Vastu, Numerology and Astrology. He is a certified nutritionist and he is a certified acupressure expert. I would like to call upon Mr. Sanjay Kumar Sharma एक छोटे से शेर के साथ कहते हैं कि भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर एज मजमाई खूबी भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमाई खूबी मुलाकाती तेरा गोया बड़ी महफिल से मिलता है मिस्टर संजय कुमार शर्मा Thank you, Mr. Firoz, for this lovely introduction. And I would like to say thanks to all participants who have joined this workshop. And big thank you to Club NPC for giving me this opportunity to present this knowledge in front of all of you. So let's start with the presentation. So the first query, as it was there in the open discussion also, what is Vastu? Vastu se aap kya samajhte hain? So in a literal sense, the Vastu Shastra is the traditional Indian system of architecture. It describes principles of design, layout, measurements, ground preparation, space arrangement, and spatial geometry. So as I heard in the initial open discussion, one of the participants said that it is based on Hindu religion. So first of all, I would like to clarify that this is not based on any religion. This Vastu Shastra is way beyond the religion. Religion came much later. Next slide, please. So what is the meaning of Vastu? The term Vastu is derived from the word Vasa. That means habitat. In the Sanskrit dictionary, which is called Amarkosh, Vastu is referred to as the site fit for construction of a residence. That is the basic meaning, a site which is fit for residing in, or so that there is no ill effect of any of the nature's any element or any heavenly body. Next slide, please. Firozi, next slide. So how the Vastu was originated?
So Vastu is literally science of architecture, finds its origin in Sthapatya Ved, which is in turn a part of the Atharva Ved, which is one of the four Vedas. Vastu is an Upved that is called a minor Ved. As you know that we have four Ved, Samved, Rigved, Yajurved and Atharva Ved. So in Atharva Ved, there's another part which is called Sthapatya Ved, which deals only in architectures. So Vastu is part of that. Next slide, please. So Vastu, if we take as a word and make it into small alphabets, even the God is made of those five elements. As we say, you can see on the screen, Bhagwan is Bhumi, Gagan, Vayu, Agni and Ni. That is earth, sky, air, fire and water. So you can say if God is there, so is the Vastu. So it is basically, as Seemaji said, it's arrangement of five elements, but it is way beyond the arrangement of five elements. There is lot to Vastu than just five elements. Next page, please. So there are different type of Vastu. So development of Vastu in India can be traced in three regions. One is the Vasara Desh, that is practiced in land between Vindhya mountains and Krishna river. This was developed by Maya, the architect of Asurs. If you remember that Lanka was also built by this Mayadana. The next is Dravid Desh, that is practiced in South India and it was developed by great Rishi Bhrigu. And the third is Nagadesh, which we see in the northern India, practiced in northern India, and it was developed by Rishi Kashyap. Next slide, please. So why Vastu is important? So here you can see there are few points which can concisely say why Vastu is important. So Vastu is the science of arrangement of five elements of the nature. Vastu is a science of orientation of 16 directions. Vastu is a science of energy management, as one of our participants also said about this. Vastu is a science to convert the non-manifest energy into manifest object. This definition opens field of Vastu, which is called remedial Vastu. This is a very important point of to say why Vastu should be done. So there are different energies which normally we say into non-manifest energy. So they can be, if they are properly arranged, they can manifest into results for you, the physical results for you. And one of the last point is Vastu is the science of study of influence of heavenly bodies, all the planets on the human basis. Next slide, please. So as I discussed earlier also, what are those five elements? So as we know that the human body is made up of five elements and so is our environment. So these elements are earth, space, water, air and fire. Next slide. So what are the 16 directions? There's a small picture here. You can see that in normal case, we know about 4 or 8 directions we talk about. But when we come to contemporary Vastu or even the Vedic Vastu also, that deals in 16 directions. Right now, it is actually sometimes there's a problem because we live in small flats. So sometimes it is difficult to, just a moment. Sometimes it is difficult to have the things as per Vastu, but there are remedial things also. You can see the cardinal, sub-cardinal, and sub-cardinal direction also listed here. I'll explain all these in details in the coming slides also. Next slide, please. So now on, you can just have a look at what are the 16 zones in Vastu and what are the attributes of those zones and what should be the ideal activity. So first we'll start with the north zone. So you can see the placement on the zone, which is in color blue. So zone attributes, this zone actually defines the clarity of mind. So the ideal activity in this zone is puja room, temple, or you can have a meditation room also here. Next, please. Next zone is called east-northeast zone. That is shown in yellow color in the picture. So
zone attribute is recreation. This is the zone of recreation. So the ideal activity in this particular zone can be, this can be a family lounge or in the living room of the family. Next, please. Then comes the east zone. The attribute of this zone is social associations. This zone is very important for the people who are into business of or job of connecting to the people. The ideal activity normally here for a room is a drawing room, and in offices there should be conference room here, which can give very good results for any business organization. Next, please. Next zone is called east southeast zone. The zonal attribute is anxiety. This zone is actually responsible for anxiety and churning. So since it is responsible for churning also, the ideal activity here will be the washing room or the laundry or the washing machine can be placed here. And you can have the best place for the toilet is one of these places. Next slide, please. So next zone is southeast zone. The attribute of this zone is for cash liquidity. So ideal activity here is that you can have kitchen here also, because as we say that fire represents money also. So in business organization, it is better to have cash counter or accounts department here. Next, please. Next zone is called south-southeast zone. This zone actually represents power and confidence. So in your home, you can have kitchen in this zone, which is the best zone for kitchen. So shall I start in Hindi? Ved sir? Yes, sir. You can do whatever language you feel comfortable with. No, like someone from the audience said that I should speak in Hindi. Okay, no issue, sir. You can use English. Okay, okay. ठीक है जी. Thank you. तो नेक्स्ट जोन है जी साउथ साउथ ईस्ट जोन है. इस जोन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस. बेस्ट रहता है इस जोन में किचन का होना, बिकॉज ये किचन के लिए बेस्ट प्लेस है इन एनी हाउस. और यू कैन हैव जिम ऑल्सो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगला जोन है साउथ जोन. इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड फेम. So if we talk about home, the best activity can be bedroom here, because this zone represents rest. आप अच्छे से रेस्ट लेंगे, रिलैक्स होंगे, then you can work good on the next day and achieve fame also. Next one please. इसके आगे हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन की. This is one of the negative zone of the house. So this zone represents expenditure and wastage. Ideal activity here should be toilet, or you can keep dustbins here. One thing is I would like to mention here that there should never be a bedroom here and you should not have even your family picture or your picture. Even placing your picture also in this zone gives you very negative results. नेक्स्ट जोन प्लीज. इसके बाद साउथ वेस्ट जोन है. इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशनशिप एंड स्किल्स. इसको हम बेस्ट यूज कर सकते हैं मास्टर बेडरूम के लिए. ओनर ऑफ द हाउस मस्ट हैव हिज बेडरूम एट दिस प्लेस. एंड इसके अलावा हम यहाँ पर स्टडी रूम बना सकते हैं. एंड इन सिनेरियो ऑफ ऑफिस, पीपल हु हैव to work for the company, जिनके स्किल से कंपनी ने पैसा अर्न करना है, they should sit here in this zone. Next slide please. Then comes the west south west zone. इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं एजुकेशन एंड सेविंग. बेस्ट एक्टिविटी जोन के लिए है बच्चों का बेडरूम. यू कैन हैव योर लॉकर रूम हियर ऑल्सो. आपकी कोई भी बिलोंगिंग्स हैं जो आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं, कोई एफडीज रखना चाहते हैं,
गोल्ड रखना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर्टी पेपर्स रखना चाहते हैं, दे शुड बी केप्ट हियर. नेक्स्ट प्लीज. देन कम्स द वेस्ट जोन. ये जोन रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स को. बेस्ट एक्टिविटी इन दिस जोन इज डाइनिंग हॉल और ड्राइंग हॉल, and in commercial establishments, especially in restaurants or hotels, keeping a kitchen in this zone gives very good result. इस जोन में अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो इस जोन की किचन में बना हुआ खाना बहुत टेस्टी बनता है. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज अगेन वन ऑफ द नेगेटिव जोन. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन का एट्रीब्यूट है डिप्रेशन का. एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं, डस्टबिन बना सकते हैं. एंड इफ यू हैव हर्ड ऑफ ओल्ड टाइम स्टोरीज जिसमें रानियों के लिए एक कोप भवन होता था, विच दे यूज्ड टू, जब भी कुछ नाराज होती थी, कुछ रोना होता था, देन दे यूज्ड टू गो टू कोप भवन. दिस इज द प्लेस वेयर कोप भवन यूज्ड टू बी देयर. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट जोन. इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं सपोर्ट एंड बैंकिंग. यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहता है स्टोर रूम बनाना, बिकॉज वैदिक वास्तु में इस जगह पर स्टोरेज बनाया जाता था खाने पीने के सामान का. So right now also you can use this as a normal storeroom or storeroom for the food grains. Next please. This is north-northwest zone. Attribute of this zone is attraction and physical pleasure. ये यहाँ पर बेस्ट रहता है, कोई भी न्यूली मैरिड कपल हो, उनका बेडरूम जो है इस लोकेशन पे बनाया जा सकता है. इस जोन के जो बेडरूम हैं उसमें छोटे बच्चे लाइक टिल 10-12 इयर्स, और वो उनको तो आप बना सकते हैं, बट नॉट फॉर पीपल हु आर इन हायर एज, लाइक 40-50 इयर्स वाले जो लोग हैं, उनका बेडरूम यहाँ ठीक नहीं रहता. नेक्स्ट प्लीज. देन कम्स द नॉर्थ जोन. इस जोन के एट्रीब्यूट्स रहते हैं मनी और अपॉर्चुनिटीज के. तो अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो इस जोन में अपना बेडरूम बनाएं. यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. नेक्स्ट प्लीज. एंड द फाइनली लास्ट जोन इज नॉर्थ ईस्ट जोन. दिस जोन रिप्रेजेंट्स हेल्थ एंड इम्यूनिटी. तो यहाँ सबसे अच्छा रहता है कि अगर कोई भी फैमिली में ऐसा है जो रिकवर कर रहा हो इलनेस से, बीमारी से रिकवर कर रहा होगा, तो वो अगर यहाँ रुकेगा तो ही विल रिकवर फास्टर. एंड नॉर्मल केस में आप घर में इस जगह पर कुछ मेडिसिन रखनी है तो वो आप इस जोन में रख सकते हैं. दिस इज नॉर्थ ईस्ट जोन. So now we'll come to like how Vastu is done. अब ये हमने समझ लिया कि ये सब ये एलिमेंट्स हैं और ये जोन्स हैं. अब इसको हम करते कैसे हैं? So there are few steps. One is colors as per the zone. Any Vastu consultant checks for the elemental colors in the respective zone and uses the right color. Color combinations to enhance balance or decrease the zonal strength as per the size of the zone. ये zonal strength क्या होगी, ये आगे के साइड में हम डिस्कस करेंगे. So even your कुछ वास्तु का imbalance है, that can be settled with the colors also. Next is balancing the 5 elements. A Vastu consultant understands and harmonizes the energy of these 5 elements and align them with your activities, objects and colors to maximize the results in the area of health, wealth and relationship. तो वास्तु कंसल्टेंट का क्या काम रहता है कि वो सब देखते हैं कि कोई डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, अगर वॉशिंग मशीन है तो कहाँ है, स्टडी है तो कहाँ है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आपके घर में रखे हैं उनको सही लोकेशन पर रीअलाइन कराना, सो दैट ऑल द 5 एलिमेंट्स कैन बी बैलेंस्ड. नेक्स्ट प्लीज. सो एक्टिविटीज एज पर 16 जोन, एज आई सेड in the previous slides, तो सब 16 जोन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हैं. सभी जोन जो हैं वो 22.5 डिग्री का हर जोन है. तो हर जोन के से रिलेटेड जो भी
एक्टिविटीज हैं, अगर हम उसी जोन में करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, बट अगर नेगेटिव एरिया में करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। और ये बैलेंसिंग कैसे 4 लेवल पर होती है, फिजिकल, एनर्जेटिक, कार्मिक एंड स्पिरिचुअल। This actually is done by including all 33 benefic, that is Devta, and 12 malefic, that is Asur energies. So there are total 45 patterns from the 5 great elements, that is called Panchtattva. So किसी भी घर में उसको हम डिवाइड करते हैं, जब एडवांस लेवल पर वास्तु होता है, तो there are 45 different energies which needs to be balanced. So out of these 33 देवता होते हैं, 12 असुर होते हैं। Next, please. This is, as I discussed, the activation of 45 Devta energies. So Vastu Purush is the presiding deity of the place and is controlled by 45 deities, which are nothing but 45 patterns of energies in a place. So it is not only the matter form, that is concrete structure, but the energy aura of the place that is being taken care in Vastu. So Vastu examination extends far beyond the physical level in and around your home. तो वास्तु में हम लोग सिर्फ फिजिकली जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, दीवारें हैं, खिड़की है, सिर्फ उतना नहीं देखते हैं, उसमें जो डिफरेंट एनर्जीज हैं वो आपके घर में कैसा काम कर रही हैं वो देख के उनको बैलेंस किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, as I told you earlier also, that it's mentioned that all activities are there, and in the inner circles there's a given the all name of all 45 devtas and asurs also. Next, please. So finally, just an example, as I said कि हम लोग उसमें देखते हैं कि कोई भी जोन जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है। There has to be an optimum strength of all the elements in the house. ये अभी आप 5 कलर देख रहे हैं, ये पांचों कलर जो हैं they actually represent the 5 elements zonal strength. तो कुछ में ज्यादा है, कुछ एरिया में कुछ कम है। तो जॉब ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट इज टू डू कि जहां पर वो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको कम करे, जहां पर कम है उसको बैलेंस करे, तो कि पूरे घर का एनर्जी जो है वो आपका हार्मोनाइज हो जाए नेचुरल फोर्सेस के साथ। नेक्स्ट प्लीज। So I'll share some important vastu tips with you, and these are general tips. You don't have to look at your map to follow these. कोई भी यूज कर सकता है। There should be absolutely no borewell, underground water tank or lift in southwest of the building. It's a 100% strictly no. वो आप करेंगे अगर बाई चांस किसी के घर में साउथ वेस्ट में ऐसा है, तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीमार हो सकता है और फर्दर और भी उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। एंड यू शुड नेवर पुट एनी मिरर ऑन द साउथ वॉल ऑफ द हाउस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में बीमारियों को इनवाइट करते हैं, अगर आपके साउथ वॉल पर कोई भी मिरर है। ऑलवेज ट्राई टू हैव विंडोज एंड और डोर्स इन नॉर्थ वेस्ट, और उनको कभी कभी खुल के भी रखें ताकि नॉर्थ वेस्ट से आपका जो है एयर एलिमेंट जो है वो बैलेंस रहे। Center of the house is called Brahmasthan, which belongs to the creator. So always keep this place empty to avoid any financial problem. Avoid shades of red and pink in the north and northeast, and shades of blue and black in the south and southeast to ensure good opportunities and continuous cash flow. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये लास्ट जो उन्होंने वास्तु टिप बोला क्या है। As you must have seen कि हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है that relates to water zone, and colors red and pink are related to fire. तो अगर हम नॉर्थ वाटर के जोन में फायर लेके आएंगे तो हमारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि नॉर्थ जोन जो है हमारा अपॉर्चुनिटीज के लिए है, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज को बर्न कर देगा। एंड साउथ इज जोन ऑफ फायर, दैट इज कैश फ्लो। इन केस अगर हम ब्लैक या ब्लू कलर जो हमारे वाटर के कलर हैं, अगर हम वो साउथ या साउथ ईस्ट में लेके आएंगे तो दैट विल हैम्पर अवर कैश फ्लो। हमारा जो रूटीन में हमारे पास कैश फ्लो है उस पर असर आएगा।
So there are simple tips to balance the 5 elements. These tips also anyone can utilize. So to balance space, you can gaze stars, watch sunrise to balance the space element. घर में कुछ होली साउंड चलाएं, ओम मंत्र चला सकते हैं, घर में विंड चाइम्स यूज कर सकते हैं. दैट बैलेंसेस द स्पेस एलिमेंट. वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू कीप अ बाउल ऑफ होली वाटर एज पर योर फेथ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर होम. वो जरूर रखें. और यू कैन यूज सम स्मॉल फाउंटेन्स आल्सो. एंड थोड़ा छोटे साइज का आप एक्वेरियम भी रख सकते हैं. एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप प्राणायाम करें ओपन एयर में. एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में आप डोर्स और विंडोज रखें. फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अपने घर के साउथ ईस्ट में शाम को दिया जलाएं. बहुत अच्छा ये एक रेमेडी है. सूर्य नमस्कार करें मॉर्निंग में, सूर्य को जल दें, वो भी एक अच्छी रेमेडी है फायर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए. And lastly, earth element, you do walk barefoot for some time in the morning. आप नंगे पैर चलेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. And you can do gardening also to balance the earth element. Next, please. So I would like to wrap up with a quote by Sir Winston Churchill in a speech which he gave in House of Commons on October 28, 1943. This is a very important quote. Next, please. He said, "We shape our buildings, and thereafter they shape us." तो पहले तो हम जो भी बिल्डिंग बनाते हैं वो हमारे हाथ में है. But once we make the building and start staying there, then whatever the building we have made, वो हमें shape करती है कि हमारी लाइफ आगे कैसे जाएगी. Next, please. Thanks a lot for your participation. We are now open for your queries now. You can keep shooting. Thank you. Thank you, Sanjay ji. You should. Oh, sorry. Firoz, I am taking over from here. Okay, thank you, Sanjay ji, for this lovely presentation. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना वास्तु के बारे में, और आई एम श्योर सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा इसे. जिनके भी क्वेश्चन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, बिकॉज टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है. तो जिन्हें भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए और अपने क्वेश्चन को शॉर्ट रखिए ताकि दूसरे लोगों के क्वेश्चन हम ले सके. और संजय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर थोड़ा उनको शॉर्ट में करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम ले सकें. श्योर. आई विल किसी का क्वेश्चन वन बाय वन. आंसर लंबा होगा तो वो मेरे से डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. या डेफिनेटली वी विल डू दैट. तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस लूंगा. जस्ट अ मोमेंट. तो स्वर्णलता मैम. यस सर. हाँ, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए. Hi Sanjay ji, I'm Samita here from South Zone, Hyderabad. Good evening. Yes sir. ये जानना था कि आपने बताया कितने साउथ वेस्ट में रियली इट वेरी हार्मफुल फॉर द ओनर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली और ओनर ऑफ द हाउस. साउथ वेस्ट में अगर साउथ वेस्ट लिफ्ट मना है, बोरवेल मना है, आपने बताया था ना. जैसे अगर वॉशरूम भी है या फिर लिफ्ट भी, तो दोनों तरफ दो भी है, तो क्या रियली इट्स वेरी हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम आएगा? यस, बिल्कुल आएगा. It's absolutely like there are few things in वास्तु जो हमें absolutely नो है, जिसका कोई रेमेडी नहीं है. There are few things like नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बोलता है कि मेरे को टॉयलेट है, तो there is no remedy to that. One has to remove that. So accordingly in south west also it is not this borewell and something like that is not required. South west में आप सिंपल समझिए, कोई भी डीप नहीं, फ्लोर डीप नहीं जाना चाहिए. सर मगर अगर हमारा अपार्टमेंट है हम लोग को, then what should be? There are few remedies. There are few temporary remedies. You can connect to me directly. So Lata ma'am, if you have any personal question or personal you have query, so you can connect to Sanjay ji through your captain, through your regional captain, or okay. Thank you Sanjay. Thank you. हाँ जी. So let's move to another question.
आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज अपना वीडियो जरूर ऑन करें ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके कि कौन है वो। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अंकित। हेलो सर, अंकित हियर फ्रॉम पुणे। सर इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन। मेरे को एक सवाल ऐसा है कि ऑनगोइंग साइट में तो मेरा क्लाइंट पूरा वास्तु का ये है, छोटे छोटे जो वास्तु में देखता है। आपने जैसे मेंशन किया था कि साउथ साइड में मिरर ना लगाए, तो अभी मेरा अभी जो करंट मिरर है वो नॉर्थ वॉल पे लगाया हुआ है बट फेसिंग साउथ साइड है, तो इट्स वर्क वो या कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज ओके। दैट्स राइट है ना? नॉर्थ वॉल पर है तो कोई इशू नहीं, यू कैन हैव दैट, बट इट्स फेसिंग साउथ साइड। नो प्रॉब्लम। Okay sir, thank you so much, that's fine. Thank you. Okay, let's move to another question. Mr. Sanjay Sharma. Mr. Sanjay Sharma from Ludhiana. So, good evening, Sanjay ji. Good evening, sir. So, my question is already actually addressed by earlier person, but my borewell is at the south side. Okay. So, I need only simple on remedies for that, because we can't change that borewell. हाँ, वो borewell को तो चेंज करना मुश्किल है, बट आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, I'll tell you the remedy what needs to be done. संजय जी, you can reach to संजय शर्मा जी through your regional captain. आप पंजाब के कैप्टन से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको संजय जी से कनेक्ट करवा देंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेहल जी, नेहल पंड्या जी। नेहल पंड्या मैम। हेलो। हाँ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था सर, बहुत मजा आया और इतना नॉलेजेबल भी था। बट मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि हम लोग हमारे घर में जो पेंटिंग्स लगाते हैं वो तो कहाँ पे कौन सी जगह कौन से वॉल पे लगेगी, वो तो थोड़ा मैं इससे मतलब यूट्यूब से सर्च करके देखती हूँ, बट हमारी साइज किसी में मेंशन नहीं किया है, तो हम कितनी साइज की पेंटिंग लगा सकते हैं क्लाइंट को अगर देनी है तो? साइज आप कोई भी कर सकते हैं, द ओनली थिंग इज कि जो पेंटिंग है व्हाट इट इज शोइंग, पेंटिंग में क्या बना है और क्या कलर्स हैं, बेस्ड ऑन दैट ही हम उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको कहाँ लगना चाहिए। जी सर, वो साइज कोई मैटर नहीं करता फिर? साइज मैटर नहीं, साइज कोई मैटर नहीं करता, साइज का तो कोई वास्तु में, हाँ, वास्तु में उससे रिलेटेड कोई मतलब वो तकलीफ नहीं होती अगर साइज में डिफर हो रहा है? नहीं, साइज में कोई इशू नहीं है, साइज के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके रानी, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। रानी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो मेरा एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। सो बेसिकली संजय सर, थैंक यू, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये सेशन था। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पीपीटी सब पे शेयर कर दो। एंड मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा घर अभी रेनोवेट हुआ है, तो मेरे घर के जो आउटर साइड में पेंट ग्रे हुआ है। हर किसी ने क्वेश्चन करा कि ग्रे क्यों करवाया, ग्रे से जितना भी तुमको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा एंड बहुत जल्दी आप गिरोगे भी ऐसे, तो क्या कुछ ऐसा रेलेवेंट है? देखिए मैं अभी सिंपली इसका आंसर इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज वो वॉल कौन से एरिया में है, कौन से जोन्स में आ रही है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। आप अपने वो कैप्टन के थ्रू मैप शेयर कर सकते हैं, कैन सजेस्ट यू ऑन दैट। Okay, sure. Because there are few areas where grey color is very much acceptable. कुछ areas ऐसे हैं जहाँ grey color बिल्कुल भी acceptable नहीं है। Okay. So that is as per the map. ठीक, okay, thank you. Thank you. Okay, let's move to another question. Rakesh ji, Rakesh Pitle, kindly ask your question. Yes sir. Good evening Sanjay sir ji. Good evening sir. मेरे को ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्विंग मशीन है मैंने अभी वेस्ट साइड को रखा हुआ है जी, तो ये पोजीशन ठीक है या क्या है, या घर पे रखना चाहिए? रख सकते हैं जी, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट पे जी, मैंने वेस्ट पे रखा हुआ है। वेस्ट पे भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, बिकॉज एज यू मस्ट हैव सीन कि दैट इज एरिया ऑफ सपोर्ट। स्विंग मशीन इज अ प्रोडक्ट व्हिच गिव्स यू सपोर्ट। जब कभी भी आपका कपड़ा है, वो कपड़ा सिल के दे रहा है ना आपको, तो आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और सेकंड ऐसा है, मेरा जो ओपनिंग है डोर, मेन डोर जी, वो एक्चुअली ईस्ट और साउथ के बीच में है, लेकिन फेसिंग जो है ईस्ट साइड है।
ओके। मतलब घर से बाहर जाते समय ईस्ट साइड दिखाई देता है और घर पे आते समय वेस्ट साइड दिखाई देता है। ओके। तो ये ठीक है? देखिए, इन जनरल तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, बट थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाते हैं वास्तु की, तो देयर आर 32 डिफरेंट एंट्रेंसेस एट अ प्लॉट। अच्छा। एक प्लॉट में 32 जगह की एंट्री होती है, तो वो एग्जैक्टली आपके मैप में वो एंट्री किस जगह पर आ रही है, वेदर इट इज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स और सपोर्टिंग यू और नॉट सपोर्टिंग यू, दैट कैन बी सीन ओनली आफ्टर द मैप। अच्छा, ओके। यस। तो आपको मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकूंगा? हाँ, अपने सर, आप कैप्टन के अपने थ्रू। रीजनल कैप्टन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक प्लीज रीच टू योर रीजनल कैप्टन एंड देन यू कैन करेक्ट मिस्टर संजय शर्मा टू देम। ठीक है सर। एक सिंगल क्वेश्चन सर, वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर प्रेसिंग द टाइम, सो वी हैव शॉर्ट टाइम। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Sorry to interrupt, Vedji. We are running short of time. Just 8 minutes left to 9. Okay, just so we I will request... take just two questions. Right. So another question is from Siddharth ji. Siddharth Mehri from Ludhiana. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, नॉलेजेबल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये वास्तु वाले मोस्टली बोलते हैं कि कंसल्टेंट्स की अगर कोई एरिया खराब हो रहा है जहाँ पे अलग साइड पे आ रहा है जहाँ पे वो फेवरेबल नहीं है, तो वहां पे तांबे की या सिल्वर की तार डाल दो, वो काम करती है कि नहीं करती? देखिए, इसकी डेप्थ में अगर जाएंगे तो सिर्फ तांबा और सिल्वर नहीं, हर जोन जो है, हर एलिमेंट जो है उसके लिए अलग मेटल होता है। ओके। कॉपर भी होता है, ब्रास, आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, ये 5 डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो अलग अलग जोन्स के लिए डिफाइंड होते हैं। तो कौन सा एरिया खराब है, वहां पर कौन सा मेटल यूज करना चाहिए, वो दैट इज एज पर द मैप। ओके सर, थैंक यू। काम करते हैं, काम बिल्कुल करते हैं, बट इट हैज टू बी द राइट मेटल इन द राइट प्लेस। एक मेरी ना और कंफ्यूजन है छोटी सी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने मुझे बोला कि साउथ एरिया में हमेशा अग्नि रहना चाहिए एलिमेंट, और नॉर्थ में हमेशा पानी वाले एलिमेंट्स रहने चाहिए। ये पूरे देश के लिए भी काम करता है, हम देश का वास्तु देखें तो? पर हमारे देश में तो साउथ में तो तीनों तरफ पानी है, और नॉर्थ और ईस्ट में हमारे पास पहाड़, माउंटेन्स हैं। ये उल्टा नहीं हो गया हमारे देश के लिए? देखिए, इसके लिए ना एक मैं वही जैसे आपको मैं बता रहा था कि वास्तु के कई टाइप्स हैं। देयर इज नॉट एक वास्तु घरों के लिए होता है, एक कमर्शियल एरिया के लिए होता है। अब आप देखें कि जो खेत हैं वो ओपन है, बट उसके लिए भी वास्तु होता है। वास्तु there's a different kind of vastu. What we are discussing right now is like residential or commercial vastu. Okay sir, thank you. Thank you. So let's quickly take the final question. Mr. Amar Kirti, kindly ask your question. नमस्कार जी, गुड इवनिंग। संजय जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, तो मैं पूछना चाह रहा था कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एक ऑफिस एरिया और एक हैवी मशीनरी एरिया और एक स्टोरेज एरिया, ये कहाँ डिफाइन होने चाहिए कमर्शियल के हिसाब से? मतलब ऑफिस एरिया किस ब्लॉक में होना चाहिए, और मटेरियल स्टोरेज जो है आपका वो किस एरिया में होना चाहिए, और हैवी मशीनरी जो हमारे पास है, ऑफिस है, वो ऑफिस में कौन बैठते हैं? ऑफिस में मैं बैठता हूँ सर। देखिए, आप अपना ऑफिस जो है या हैवी मशीनरी भी जो है, ये दोनों प्राइमरीली साउथ जोन में होनी चाहिए। आपका ऑफिस जो है साउथ वेस्ट जोन में रखिए आप, सबसे अच्छा है आपके लिए। और ये स्टोरेज सर, मटेरियल स्टोरेज जो होता है, मटेरियल स्टोरेज आपका फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का? सर दोनों का बता सकते हैं, फिनिश गुड भी ले सकते हैं और नॉन फिनिश भी ले सकते हैं। फिनिश गुड्स आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ जी। और जो अनफिनिश होते हैं जैसे बोर्ड, प्लाई, लैमिनेट्स और मेटल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, ये अनफिनिश जो होता है मटेरियल। अनफिनिश्ड मटेरियल के लिए आप कोई भी पॉजिटिव जोन ले सकते हैं, बट वो टुवर्ड्स वेस्ट या साउथ साइड में ही रखिए उसको। अच्छा, वेस्ट या साउथ साइड में ही रखिए। जी जी, वेस्ट में और ये मशीनरी जो है ये साउथ वेस्ट में जाएगी हमारी। जी, आपका ऑफिस और मशीनरी ये प्राइमरीली साउथ वेस्ट जोन में हो तो ज्यादा बेटर है। साउथ वेस्ट। जी
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. So nice of you. Thank you. ओके, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और अगर किसी के और सवाल हैं तो वो अपने रीजनल कैप्टन से संपर्क करके मिस्टर संजय शर्मा से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 1-to-1 बेसिस। संजय शर्मा जी विल बी मोर देन हैप्पी टू fulfill their queries, to give answer to their queries. Thank you once again. Thank you, Sanjay ji. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. And let's take quickly some introduction from the first time joinees. जिन्होंने सबसे पहले आज जिन्होंने ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम, तो उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, काइंडली रेज देयर हैंड सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई देम। जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, काइंडली रेज देयर हैंड। जी पहले उन लोगों से बोल दीजिए जिन्होंने पहले अपने हैंड रेज कर रखे थे, वो प्लीज लोअर डाउन देयर हैंड्स प्लीज। जी 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 हाँ, वो हम कर सकते हैं, नो इश्यू। फिरोज सर, आप पीपीटी शेयर करना बंद कर सकते हैं। I'd like to request everyone to turn on their cameras, please. वेद जी, एक दो क्वेश्चंस YouTube पे भी आए हुए, तो वो संजय जी को फिर ऑफलाइन भेज देंगे। जी जी सर। I'd also request new joinees to raise their hands, please. Hello everyone. जी जी हेमा जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेमा जी म्यूट पर है। Let's move to another participant. हेमा जी, आप म्यूट पे हैं। ओके। Yes. जी, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, और आपको क्लब एनपीसी में किसने इंट्रोड्यूस किया है? Anji, I am Hema Goyal and I am doing this course, Vastu course from Manoj Jiwalji. And I am connect with this course to my Panch Tattva chat room. जी नहीं, अब हमें आपका इंट्रोडक्शन लेना है। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम बता दिया, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं और आपका प्रोफेशन क्या है? मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं जस्ट अभी वास्तु का कोर्स कर रही हूँ, तो उसी चैट रूम से मैंने आपका ये ज्वाइन किया है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लगा आज की प्रेजेंटेशन वर्कशॉप संजय जी की? बहुत अच्छा लगा, संजय जी ने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो आप अभी एनपीसी के मेंबर नहीं हैं? आप अभी नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, तो प्लीज आप नोएडा से हैं? हाँ जी, नोएडा से। हाँ जी, तो प्लीज आप क्लब के मेंबर बनिए, और हम हर वेडनेसडे इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप लेके आते हैं, नॉलेजेबल वर्कशॉप सेशन लेके आते हैं, तो आप उनसे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। आप प्लीज एनपीसी के मेंबर। ठीक है जी, थैंक यू जी। Next we have Mansi Patil. Hello everyone. I'm not a new joinee, but I'm joining today workshop after a very long time today. So let me introduce myself. I'm seeing very much new faces, so I was very curious to see you all people also over here. I was been introduced by Sanjay Mandat sir, and I'm an architect. I'm from Maharashtra, north west of Maharashtra region, and currently I'm residing in Pune for pursuing my Masters of Landscape Architecture, and that's all what about me it is. Thank you, ma'am. I request you to please continue with NPC, and you will get more and more information and more knowledge from NPC. You will get more and more benefit from NPC. So please continue and do join us regularly on Wednesday and Friday.
Yes, sir. Sure. With sir, if I'm allowed to say something to Miss Mansi. Yes, sir. Please. Would like to have your knowledge also to be shared with the platform. Yes, I would like. I have a small thing I learned today itself. It was relating with Vastu Shastra, that it was associated as well. We are learning with landscape architecture. We associate with plants with habitats. So there are certain 4 types of plants which are good at to be placed in 4 direct cardinal directions. So that was a small story that we learned today. It was just new for me. Like we have a word banyan tree in the east, umber in the south, timber in the west, and north we have ficus trees. So I wasn't curious to ask sir ki what is the association for plants and vastu again then. We'll surely try to have a workshop on that also. Yes sir, sure. Okay, Piyushi, call next participant, next new joinee. Piyushi. Mr. Baldev Singh, can we have Mr. Baldev Singh? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम बलदेव सिंह है, लुधियाना से हूँ और आज काफ़ी नॉलेज मिली हमें आज की मीटिंग में। तो पहली बार मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, पहले मैंने कल की थी लेकिन शाम की मीटिंग मैंने आज की आपके साथ। और जो हमारा काम है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, उसमें डील करते हैं। थैंक यू। सर आपका कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? लुधियाना से सर। ग्रेट सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप एनपीसी के मेंबर हैं अभी सर? हाँ जी सर, मेरी अभी ज्वाइन किया है हमने सर। मेरी आपके साथ आज पहली मीटिंग है, कल पहले सेकंड मीटिंग है, कल हुई थी और आज जो हुई है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल ब्रिंग यू मोर एंड मोर वर्कशॉप। जी, थैंक यू। फिरोज जी, काइंडली आस्क न्यू joinees अगेन। आरती कुमारी। Hi sir, good evening. जी, अपना नाम बताइए और आप किस शहर से हैं आप वो बताइए, और आप क्या करते हैं आप वो बताइए प्लीज। है My name is Aarti. I am interior designing student. I belong from Bihar. ओके, थैंक यू। आपको वर्कशॉप अच्छी लगी आज की? Yes sir, it is very. ओके, तो आपने एनपीसी ज्वाइन किया हुआ है? No sir. आज ओके, तो मैंने आपको मीटिंग वर्षा मैम के थ्रू ज्वाइन की थी। अच्छा, वर्षा मैम के थ्रू ज्वाइन किया। तो आपको वर्षा मैम बिहार के जो हमारे कैप्टन हैं उनका नंबर देंगे, आप उनसे बात करके आप एनपीसी क्लब जो है वो ज्वाइन कीजिए और आपको हर बुधवार को काफी अच्छी वर्कशॉप मिलेंगी सीखने के लिए। थैंक यू। Thank you. There is another person from Haryana, but I can't see her name. Could you please come up? Sir, Pallavi. Hi, this side Pallavi. I'm from Gurgaon. Basically, I'm from Bihar, and I'm pursuing interior design course in INFT. And Varsha ma'am recommended me to do this class. Very good. Thank you. How did you feel? How did you like this? Yes, sir, I like it. Liked it. It is so knowledgeable. Thank you. Then we only have Miss Nidhi Gagan, I guess. Gagneja. All right. Miss Nidhi, please come up. Nidhi, you are on mute. Good evening, sir. Myself Nidhi, and I am from Ludhiana, Punjab, and I am interior designing. I am doing interior designing, and I am doing internship under an architect in Ludhiana in Model Town. Great, Nidhi. How did you like today's workshop?
Sir, it was very much knowledgeable, and I get to know a few things in my own home that I need to change. It was great for me as well. अपने आप मत कीजिएगा, संजय सर को बुलाइएगा उसके लिए. हाँ जी sir, sure. And are you a member of NPC? Yes sir, I have joined yesterday only. Oh, great. So I request you to please stay tuned, and we have very knowledgeable sessions we do on on Wednesday, and we do chit chat meet on Friday. So do join us in both. Yes sir, thank you so much. Okay, thank you very much for joining. Firozi, another person has raised hand, so kindly ask them to. मेरे को दिख नहीं रहे कौन है. बलदेव सिंह जी हो गए हैं, ये भी हो गया, आरती जी.